हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक डाउट था। हाँ बोलो, पूछो। मैम जब हम लोग सीमोस लॉजिक से बूलियन एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं या फिर कोई भी गिवन एक्सप्रेशन होता है उसको ड्रॉ करेंगे, हम्म। तो मैम उसका तो हमेशा इन्वर्टेड आउटपुट आएगा ना। इन्वर्टेड आउटपुट देखो, जो मतलब आप बोल रहे हो वैसे आपको बूलियन फंक्शन दिया गया है, जैसे यस। हम लोग क्या करते हैं उस फंक्शन को हम लोग ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट लगा के उसको लॉजिक उसका इन्वर्ट करके फिर करते हैं, राइट? तो सो मैम मतलब वेन कोई एक्सप्रेशन भी गिवन रहेगा, कोई भी फंक्शन गिवन रहेगा, तो उसको भी पहले हम लोग इन्वर्टेड कर देंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, जैसे मानिए जैसे आपको दिया गया है y इक्वल टू ए बी प्लस सी, राइट? एग्जाम में आप देखिएगा ना, आपको थोड़ा ब्लर आ रहा है क्या? नहीं मैम ठीक है। ठीक आ रहा है ना? सो एग्जाम में आप देखिएगा, आपको ना लॉजिक ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो मैम ऑटोमेटिकली मतलब ऐसे दिया हुआ रहेगा। नहीं मैम, कहीं कहीं देखे कि ऊपर कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ, तो उसी में कंफ्यूजन था कि तो फिर वो तो इन्वर्टेड आउटपुट देगा। कॉम्प्लीमेंट लगा नहीं हुआ है, आप एक काम करेंगे, मुझे वो एग्जाम्पल दिखाएंगे, उसका सॉल्व आपके पास है? नो मैम, मैम एक्चुअली यूट्यूब पे ही देख रहे थे एग्जांपल्स, तो उसमें कहीं कहीं पे वो लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं लिए थे ऊपर में, तो फिर वो मतलब जस्ट ड्रॉ कर दिए थे। और किसी किसी में देखे कि वो लोग आगे सीमोस इन्वर्टर लगा दिए थे ताकि जो आउटपुट है वो वापस से इन्वर्ट हो जाए ओरिजिनल आउटपुट लाने के लिए। एग्जैक्टली वही करना होता है। आइदर आपके पास ऐसा रहेगा एक्सप्रेशन, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ रहेगा, और या तो फिर आप पूरा ये जो चीज है इसको पूरा ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने के बाद लास्ट में कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे, तो आपका जो लॉजिक है वो इन्वर्टेड हो जाएगा। ओके मैम, तो मैम सीमोस इन्वर्टर लगाएंगे लास्ट में वापस से। एग्जैक्टली जो एक सिंपल वाला सीमोस इन्वर्टर होगा, ऐसा ऊपर एक एनमोस, ऊपर एक पीमोस, नीचे एक एनमोस, यहाँ से आप फाइनल आउटपुट लोगे अपना। और ये जो पार्ट है, इस मानिए आगे पूरा सर्किट लगा हुआ है, उस सर्किट का जो आउटपुट है वो जाएगा इस पे, एंड दिस विल बी योर फाइनल आउटपुट ऑफ द इक्वेशन। ओके सिर्फ मैम। एक वीडीडी आपको लगाना होगा, क्योंकि आपका लॉजिक इन्वर्टेड होता है ना सीमोस जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो। यस मैम। ओके। ओके। तो आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे ऑल्टरनेट गेट लॉजिक्स। थर्ड मॉड्यूल का जो आपका जो लेफ्ट ओवर पार्ट था, उसमें आप देखोगे उसमें एक लॉजिक था स्यूडो इनमोस लॉजिक, एंड अनदर वन वाज योर डोमिनो लॉजिक. These two things come under the alternate gate circuit. So what is an alternate gate circuit? The gate topologies used as an alternate for CMOS logic, that is to overcome the limitations of CMOS logic. देखिए, जैसे CMOS लॉजिक हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई जब टेक्नोलॉजी यूज होता है तो उसका डिसएडवांटेज भी होता है एडवांटेज के साथ साथ. सो टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग CMOS लॉजिक, वी यूज द alternate gate logics. देयर आर बेसिकली 6 टाइप ऑफ गेट लॉजिक्स. उसमें से हम लोग का सिलेबस में जो है, एक है आपका स्यूडो एनमॉस लॉजिक, एंड द सेकेंड वन इज योर डोमिनो लॉजिक. बट ये दोनों को समझने के लिए तीसरा एक चीज हम लोग थोड़ा उसका आइडिया लेंगे, दैट इज योर क्लॉक्ड CMOS. इसका पूरा डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे, but as because this clocked CMOS is used in domino logic, we will see some concept of clocked CMOS in domino logic. CMOS का डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट डिसएडवांटेज है, जब आप CMOS लॉजिक यूज करते हो तो उसमें आपका क्या होता है, एक रहता है आपका NMOS, दूसरा रहता है PMOS. मीन्स CMOS is designed like this, one PMOS and another NMOS. Here it is grounded, here is the VDD source, the output is taken from this end. So to design a CMOS, you need one PMOS and one NMOS. Suppose a logic, एक boolean expression आपको दिया हुआ है y equal to a plus bc. So to design this particular logic, ये देख के आप क्या समझ जाओगे, आप और एंड कनेक्शन सब भूल जाओ.
बट ये देख के इतना तो आपको समझ में ऑलरेडी आया होगा that you need 3 PMOS and 3 NMOS to design this logic or design this Boolean expression. आपको pull up network में, in case of pull up network, you need 3 PMOS, and in case of pull down network you also need 3 NMOS. यहाँ से आपका V out है, यहाँ से आपका inputs है, मानिए यहाँ पे आपका input है. So first criteria to use alternate gate circuit is to reduce the number of transistors in a circuit. मेरा first requirement है to reduce the number of transistors used in a circuit. So to determine this Boolean expression, basically you need 3 plus 3, total 6 number of transistors, 3 PMOS and 3 NMOS. So मेरा first criteria क्या होगा? Sorry. To reduce the number of transistors. So how we will reduce the number of transistors? In case of pseudo NMOS technology, what we use only one PMOS in the circuit. सिर्फ एक PMOS यूज होता है. कैसे यूज होता है? इस पिक्चर पे आ जाओ, इसका डिटेल हम करेंगे. See, here is the voltage source, that is your VDD, right? ऊपर देखिए, ऊपर में सिर्फ one PMOS is there and which is connected to ground. Why this is connected to ground? Let me explain you. Suppose this is your VDD. This is your VDD, and here I have drawn only one PMOS and which is connected to ground. अब lower वाला part भूल जाओ. First, ये concept clear होना चाहिए. Why this is connected to ground always? See, as this is PMOS, इसका input जो आता है, this will invert the output of it. Means if you give 0 to its input, this will be 1. And if you connected this with, suppose you are connecting this with VDD, this is VDD, this is your PMOS, and this is connected to 5 volt. So what it will give? It will give 1, and here it will become 0. So if we connect plus 5 volt power supply to the gate of the PMOS instead of a ground, this will give 1, logic 1, and the logic 1 will be inverted to the gate. So when this will be inverted, what it will form? It will form a open circuit. Means the switch will be open. As this is open, current cannot flow through this. इसमें से VDD flow नहीं होगा. Because this is not a short path, this is considered as an open path. So if we always connect the gate to ground, it will always provide the logic 1 to the PMOS. So whenever it will give logic 1 to the PMOS, this path will be always shorted. This will be always a closed circuit. So it will always allow the PMOS to pass the VDD towards the output. My main motto of connecting the upper PMOS or the pull down network to the ground always, because to make this particular PMOS short circuited or in on state, it is always in on state, as because it is connected to ground. Next, for the pull down network. Now if we come to the pull down network, you can see this pull down network will be designed as it is. जैसे हम लोग करते थे ऊपर and नीचे और connection, which one will be in parallel, which one will be in series, we will follow the same logic for the pull down network, but the whole pull up network will be replaced by a single PMOS which is connected to ground. This is the schematic diagram of pseudo NMOS logic. Now come to the detailed part of it. First, CMOS logic use 2N transistors. 2N transistors how? Because why 2N transistors? Suppose you have given a logic of y equal to AB. Y equal to AB means there are two parameters. Two parameters means you need
2 PMOS and 2 NMOS to design the corresponding logic. So the number of PMOS and the number of NMOS are equal. Hence, if you consider the number of PMOS as in n, so it will be doubled out for the total value. The total value will be 2n. Means same number of NMOS also be needed. So CMOS logic uses 2n transistors, right? It will always need 2n transistors because the number of NMOS and the number of PMOS are equal. Next, to overcome alternate gate circuit are used. First is your pseudo NMOS. उसमें देखिए, if you consider the picture simultaneously, picture को simultaneously अगर देखोगे, first क्या आता है? मैम 2n ट्रांजिस्टर वाला क्लियर नहीं हुआ. कौन सा वाला? मैम अगर y इज इक्वल टू ए बी की जगह हम c भी ले 3 रहे तो क्या करेंगे? फिर भी 2n ही होगा. बोलो y इक्वल टू फिर मैम y इज इक्वल टू ए 3 कोई भी 3 लीजिए ना, a b c तीनों को मिलाकर हो गया, राइट? यस मैम. फिर इसमें कितना ट्रांजिस्टर लगेगा? आप ही बोलो कितना ट्रांजिस्टर लगेगा? मैम एक काम 12 करते, देखो कितना पैरामीटर्स है? पैरामीटर्स कितना है? 6 मैम. n 3 है तो 2n 6 ट्रांजिस्टर. हाँ Exactly, 2n will be 6 because here n is 3 parameters are there, so the number of transistors will be 6. How? You will need 3 NMOS and 3 PMOS, right? जैसे मानिए एक लॉजिक, जैसे आपको क्लास में एक दिन करवाए थे, सपोज y equal to a into b plus c plus de. So how many, ये सर्किट अब भूल जाओ, आप मुझे यह सब बताओ पहले कितना पैरामीटर्स है इसमें? How many parameters are there? मैम 5. 1 2 3 4 5. So the total number of transistors will be 5 into 2, that will be 10. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, a को डबल डबल लिए है, तो इसको आप अगर शॉर्ट करते हो यहाँ पे a will be 1. इसको हम क्या किए हैं, इसको हम थोड़ा तोड़ के इसको हम इलेबोरेटली किए हैं. अगर वो ना करते, इफ यू कंसिडर दिस 2 a as in 1a, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. a को मैंने तोड़ के दोनों तरफ लिया है, but if I consider a as in a single one, so how many transistors are there basically? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is the logic that CMOS logic always uses true N transistors. Now it's clear now? Yes ma'am. Okay, fine. So now यहाँ से देखो, अगर हम पिक्चर को साइड बाय साइड रखते हैं, let me take the picture side by side. इसको आप देखो, पिक्चर को साइड बाय साइड ध्यान में रखो. फर्स्ट, it is similar to NMOS logic. Fine. So pull up network grounded gate PMOS. Pull up जो नेटवर्क है मेरा, that is a grounded gate PMOS. Why it is grounded gate? I have explained you already, right? To make the PMOS always in on state. Next, the pull down network NMOS logic implementation. In case of pull down network, what will happen? If it is in AND connection will be in series, and if it is in OR connection will be in parallel. It will follow the same logic for NMOS logic implementation. Now, PMOS is always on depending on its input. Pull down network implement the logic. Okay. The number of transistors is n plus 1. Why n plus 1? Suppose you have given an example. मैम बहुत ब्लर है. अभी देखो तो ब्लर आ रहा है कि नहीं? पहले से ठीक है. ठीक है ना? ठीक है, चलो देखो. सेकेंड चीज हम क्या बताए थे?
when we use pseudo NMOS logic, the number of transistors become n plus 1. How it's become n plus 1? Let us take the example y equal to AC plus B. So let us draw the pull down network first. This is my V out. AC is in AND connection, and in pull down network it will be in series. So A, C, this is my A and this is C, and this is parallel to B. Because B is in odd connection with A and C, so this is your pull down network. Now for the pull up network in pseudo NMOS logic, what I have told, we will always use a single PMOS which will be connected to ground like this. So for this logic, how many? The N is 3. So N is 3. So the total number of transistors will be 3 plus this one plus 1, that is my 4. So if your logic gives you y equal to AB plus CD, how many total number of, suppose आपके MCQ में आया एक इक्वेशन दे दिया गया है y equal to AB plus CD and you are asked to determine how many transistor will be used if it is used in pseudo NMOS logic. क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना. If you are asked how many transistors are used, if you are asked how many transistors are used, then it will be twice of n, means 2 into 4, that is my 8, right? And how many pseudo transistors used? If it is pseudo logic, then it will be n plus 1, means 1, 2, 3, 4, 4 plus 1, that is 5. Is it clear? So अगर Yes, आपको sir. MCQ में पूछा गया जाता है ट्रांजिस्टर्स कितना है, तो it will be twice n. If it is in pseudo NMOS logic, then the number of transistors will be 4 plus 1. This one represent a single PMOS which is used and that is connected to ground always. So from this equation only you should be cleared that the number of transistors previously used was 8, and if it is designed using pseudo NMOS logic, the number of transistors are reduced to 5. तो क्या हो रहा है, आपका जो आईसी फैब्रिकेशन है, सेम लॉजिक को जब आप इंप्लीमेंट करते हो, यू कैन इंप्लीमेंट द सेम लॉजिक यूजिंग लेस नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स. सो द एरिया ऑफ द आईसी इज बिकमिंग लेस, व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी, राइट? सो यहाँ पे जो हम बताए थे, that is CMOS logic uses 2n transistors that requires more area to overcome, alternate gate circuits are used. And one of them is my pseudo NMOS logic. So अगर मैं इसको थोड़ा elaborate करती हूँ, elaborate in the sense, suppose I am giving you some examples, जैसे मैंने जितना सारा gates किया हुआ था, suppose I am giving one example, AND gate. AND gate में क्या था आपका logic? That is y equal to AB, right? हम प्रीवियस वाला सर्किट नहीं ड्रॉ कर रहे, आई एम ओनली ड्रॉइंग द pseudo NMOS logic of it. This is connected to ground. This is 5. You can write VDD. This is VDD. This is V out. Both will be in A and this is B. Right? Previously क्या होता था? Previously ऊपर जो AB है, यहाँ पे एक सीरीज के तरह कनेक्टेड होता, दोनों के साथ पैरेलल में कनेक्टेड होता.
right? So number of gates previously used were 4. Now it will be 1, 2, and 3. This is the AND gate logic. If you consider for OR, y equal to a plus b. For the pseudo logic, it will become VDD See, it's exactly same as in the drawing of the, or implementation of CMOS logic using CMOS logic of the gates and or not, XOR, XOR, NAND, not जितना भी आपका सारा gate है, all are same. We are just replacing the pull-up network with a single PMOS which gate is connected to ground. Otherwise, the whole circuit means the whole pull-down network will be same as it is. This is your V out. This is OR connection. This will be in parallel. This is ground, A and B. Right? So likewise, you can draw for NAND gate, NOR gate, OR gate. सबके लिए मतलब लॉजिक उसका सेम ही हो जाएगा. NAND और NOR का भी कर लेते हैं. Suppose for NAND, it will be like VDD. VDD के बाद आता है. एक सेकेंड. यहाँ पे एक नॉट गेट लगाना था, नहीं बोले आप लोग. ऐसा आउटपुट जाता है इसका. So for NAND, it will be like this is my V out, and for NOR, it's VDD. This is my V out. So in case of AND or NAND or NOR, what I am basically doing, I am just replace the pull-up network with ground gated PMOS logic, and the pull down network will follow the same NMOS implementation. AND connection will be in series and OR connection will be in parallel. So this is the whole concept of using pseudo PMOS logic. Sorry, the pseudo NMOS logic. Is it clear for everyone? Yes, ma'am. Okay, fine. Now we will move on to the domino CMOS logic. So before coming to domino CMOS logic, we will quickly see two things. First is what is static and dynamic CMOS,
and the second one is what is clocked CMOS. दो चीज है वो आपको पहले ध्यान में रखना होगा. First, we will come to the point of comparison of static and dynamic CMOS. So, what is a static and dynamic CMOS? अगर आप पिक्चर पे पहले ध्यान देते हो, इस पे आप देखो, in case of static CMOS, it is like VDD, then the pull-up network consists of PMOS, and the pull-down network consists of NMOS. It is counted to ground. Here the output has been taken. There are k number of inputs for PMOS and the same number of inputs to the NMOS. Means the static CMOS follows the basic concept जो आपको first class में हम कराए थे कि CMOS से जब हम गेट डिजाइन कर रहे थे, those implementations were used as in static NMOS logic. Static NMOS में क्या होता है, जो आपका number of transistors है, that is twice n, means same number of NMOS and the same number of PMOS are used to design the particular logic. Next, see the dynamic CMOS. In case of dynamic CMOS, you can see two clocked gates are here. This upper PMOS is connected to a clock pulse and the lower NMOS is connected to a clock pulse, and in between here the pull down network is established. Pull down network जो आपका है, अगर ये पार्ट अगर आप भूल जाते हो, forget this part. इस पार्ट को आप देखोगे, so this is nothing but a pseudo NMOS logic, where pseudo NMOS logic में क्या था, this part was always connected to ground, but instead of always connecting it to ground, a clock pulse has been given. Clock pulse means it will get a pulse sequence of 0 and 1. Sometime it will be 0, sometime it will be 1. Means sometime this PMOS will be when the clock will be 0, the PMOS will be 1 on condition. When the clock will be 1, the PMOS will be in off condition. It will be acting like a switch, on off on off on off switch, because of the clock pulse to its gate. So this upper part is nothing but a pseudo NMOS, where the PMOS is connected to a clock pulse instead of a gate, instead of grounding it, right? And इसके नीचे आप थोड़ा देखोगे, here what has been done, downside of the pull down network on another NMOS has been attached to it, and this NMOS is also connected to clock pulse. What this clock pulse will provide, this clock pulse will decide this pull down network is in working function or not. Means if this clock pulse will get for the pull down network, if the clock is 0, the transistor will be off, and if it is 1, the transistor will be on. So when the clock will be off, means it is providing an open circuit, the output cannot be drawn to the ground. And when this is on means this will provide a short circuit. Short circuit होने से क्या हो जाएगा, the pull down network will function. Means it will work on vice versa technique, because a same clock pulse is given to the both of the circuit. When it will be 0, the upper part, the pull up network will be turned on, and when it will be 0, the lower part will be turned off. When the pulse will be 1, the upper part will be turned off and the lower part will be turned on. Likewise, based on the clock pulse, this switching technology will work between the pull up and pull down network. This is the basic concept of dynamic CMOS. Static CMOS में क्या था, there were no particular clock pulse, जो भी है आपको logic मिलता था, उससे आप अपना जो गेट CMOS लॉजिक है उसको आप डिजाइन करते थे डिपेंडिंग अपॉन द बूलियन एक्सप्रेशन. So but in case of dynamic CMOS, what you do, you design the pull down network accordingly. The upper PMOS is connected to a clock pulse, and another features which has been added here, the lower NMOS, which is also connected to clock pulse, and these two clock pulse are same. These two clocks are same, means a same clock pulse is given to both input. So when it will be 0 means this will be on, and when this will be 0, this will be off.
And when this will be 1, this will be off. And when this will be 1, this will be on. So depending upon the clock pulse, this circuit will decide whether the pull-up network will work or the pull-down network will work. And this CL is called the load capacitance. I will tell you why this load capacitance is used. Next, come here. The number of PMOS used here is K, and the number of PMOS is K. So the total number of transistors will be K plus AK, or you can say as twice N. Same number of PMOS and same number of NMOS, right? But in case of dynamic CMOS, you can see the number of NMOS used is number of NMOS used in pull down network. That is, if it is K, I'm writing K over here, and another one PMOS is introduced here, that is K plus 1. And the number of PMOS is used, that is only 1. So my total number of gate will be, if I ask you total number of gate, that will be K plus 1 plus 1, that is K plus 2. Right? So what we can see, size less, obviously size is getting less in case of dynamic CMOS. Q, क्योंकि I'm completely replacing the upper part, means the upper pull-up network, by a single PMOS. So the number of transistors are getting reduced, right?